Hello dear learners, welcome back to Study with Buddy. In today's video, we are going to learn about Class 10 Science, Chapter number 15, Our Environment. So let's start with environment. Everything that surrounds us is environment. जो भी हमारे आसपास है, that everything is environment. Right? Environment को हम हिंदी में बोलते हैं वातावरण. It includes both living and non-living components. अभी जो environment है इसमें living components तो होते ही हैं, but environment में non-living components भी होते हैं. So environment consists of living and non-living components. Living components में हम organisms को count कर सकते हैं, like animals, insects, birds, human beings. Non-living components में we can include the rocks, the air, grass, etc. Next, we'll learn about ecosystem and its components. So let's start with ecosystem. Ecosystem क्या है? An ecosystem consists of all the living organisms in the area along with the non-living components and their interaction. There are different type of ecosystem. इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी होते हैं एंड एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी जो इंटरेक्शंस हो रही होती हैं दैट इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. So ecosystem is the interaction between the living organisms and the non-living organisms in a particular area. And the different types of ecosystem are the natural ecosystem and the artificial ecosystem. Let's learn about the types of ecosystem in detail. So first one is natural ecosystem. The ecosystem which exists in nature on its own is known as natural ecosystem. तो नेचुरल इकोसिस्टम कौन सा होता है? दैट इकोसिस्टम जो बाय नेचर बनता है, लाइक द रिवर्स, ओशंस, लेक्स, पोन्स, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, ये जितने भी इकोसिस्टम है ये बाय नेचर बने हुए हैं. दीज आर नॉट मैन मेड. अभी जो फॉरेस्ट है वो मैन ने तो नहीं बनाए ना. ह्यूमंस आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉरेस्ट. जो डेजर्ट है वो भी ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाए हैं. ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स, ऑल दीज थिंग्स आर बाय नेचर. सो दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम. The next one is artificial ecosystem. Artificial ecosystem क्या होता है? Those ecosystem which are man-made. The man-made ecosystem are known as artificial ecosystem. For example, gardens, parks, crop fields, aquarium, zoos, etc. So all these are artificial ecosystem. Okay, so now we'll learn about the components of an ecosystem. The ecosystem consists of two main components and they are biotic and abiotic components. Here in the flowchart also we can see that the components of ecosystem consist of biotic components and abiotic components. Let's learn about biotic and abiotic components in detail. सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में. So the biotic components are the living components like plants, animals, microorganisms, and they consist of producers, consumers, and decomposers. हमारे पास जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, these are those components which are living. For example, the plants, animals, microorganisms. It also include human beings, right? And जो हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट होते हैं इन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दिस फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर, सेकंड वन इज कंज्यूमर एंड द थर्ड वन इज डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्रोड्यूसर आर द ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. So producers are those organisms which are responsible for production of food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना सकते हैं from the sunlight and raw materials, those are called as producers. For example, all the green plants. जो green plants होते हैं
in the presence of sunlight and water and carbon dioxide, they can produce their own food. So those are producers. Next is consumers. Consumers कौन है? Consumers are the herbivores who get their food directly from plants. जो herbivores होते हैं directly plant products को खाते हैं as their food. Those are consumers. जो carnivores who get their food indirectly from plants. जो carnivores प्लांट से फूड लेते हैं बट इनडायरेक्टली कैसे? जो कार्निवर्स हैं दे आर, जो कार्निवर्स हैं वो हर्बिवर्स को खाते हैं एज देयर फूड, तो इससे है दे आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स. And the omnivores which get their food directly or indirectly from plants, all these animals are consumers. तो जो हमारे पास consumers हैं, consumers are again divided into 3 subcategories which are herbivores, carnivores and the omnivores. The next one is the decomposers. Decomposers क्या है हमारे पास? Decomposers are the microorganisms that decompose dead plants and animals. जो organism dead plant and animals को decompose करते हैं, उनके dead remain को decompose करते हैं, those are known as decomposers, which includes certain bacteria and fungi and decomposers. The next one we are going to learn about abiotic components of an ecosystem. So abiotic components are the non-living components which include air, water, soil, minerals, sunlight, temperature, wind, etc. Let's summarize the ecosystem and its components. So we have this ecosystem here. And this ecosystem is subdivided into 2 components which are biotic and abiotic. The biotic components are again divided into 3 categories: producers, and here are the consumers, and decomposers. So the consumers are again divided into 3 categories which are herbivores, carnivores and omnivores. So ecosystem is divided into 2 components, biotic component and abiotic component. Biotic components वो components होते हैं which are living, and abiotic components are those components which are non-living. Biotic components are subdivided into producer, consumer and decomposers. Producer are those organisms which can produce their own food by the process of photosynthesis, whereas the consumers are those organisms which are dependent on the green plants or the producers to get their food. Decomposers are those organisms which decompose the dead remains of plants and animals. The carnivores are subdivided into herbivores, carnivores and omnivores. The herbivores are those organisms which are dependent only on plant products. They eat only the plant products. The carnivore are those organisms which are dependent on herbivores, like they eat the herbivore. These are those organisms which eat other organisms to get their food.
And omnivores are those organisms which are dependent on plants as well as on animals. They are both. They eat the plants also and they eat the animals also. So they are directly as well as indirectly dependent on the producers. Okay, so now we are going to learn about food chain. A food chain is a flow of food energy from one organism to the next and so on. Food chain क्या है? It is the flow of food energy from one organism to the next. कोई एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म तक फूड एनर्जी का ट्रांसफर होना, फ्लो होना, दैट इज नोन एज फूड चेन. They usually start with the producer. Start कहाँ से होती है food chain? From the producer, which include plants, and ends with the carnivore. In a food chain, an organism gets food from one group of organism. For example, this grass. This grass is the producer, right? This grass is the producer, which is a green plant, and the food chain is starting from the grass. Grass is eaten by the cricket, which in turn is eaten by the bird, and which finally is the food of a snake. So this is a food chain in which the energy firstly flows from the grasses to the cricket, then from cricket to the bird, and bird to snake. This is known as the food chain. Again, here is flow chart of how food chain works. जो producer है, it prepare its food in the presence of sunlight, and again जो producer है उसे कौन consume करेगा? Primary consumer. यहाँ पर आप example में देख सकते हो this cricket is the example of primary consumer. और जो हमारे पास bird है, it is secondary consumer, and this snake is the tertiary consumer. So again, this is the example in which this some green plant or the grassy product is eaten by this rat, which will be eaten by the secondary consumer and which will be consumed by the tertiary consumer. और ये जो है producer है, primary consumer है, secondary consumer है, जो tertiary consumer है, इनकी जो dead remains होंगे वो कौन decompose करेगा? The decomposers. So this is how the food chain works. Next, we are going to learn about food web. Food web is a group of several interconnected food chains. In a food web, organisms get food from more than one group of organisms. Food web में there is interconnection between a large number of food chains. तो यहाँ पर आप देख सकते हो this is a food web, and इस food web में ही एक single chain नहीं है. There are a number of food chain which are interconnected. And in a food chain, in a food web, an organism can get food from more than one group of organisms. Like आप यहाँ से देख सकते हो this bird is getting food from this insect as well, from this insect as well. कितने सारे insects हैं, जो कितने सारे यहाँ पर हम कह सकते हैं secondary consumer को food देने वाले primary consumers हैं. Here bird is working as, अगर हम इस food chain की बात करें which is at last, तो यहाँ पर जो है bird is acting as a tertiary consumer. Whereas अगर हम इस second food chain की बात करें तो this bird is acting as a secondary consumer. So food web में more than one group of organism से कोई भी organism अपना food obtain कर सकता है. Moving forward, we have these trophic levels. The various steps in the food chain where the transfer of food energy takes place are called as trophic levels. तो हमारे पास trophic levels क्या होते हैं? These are those stages जहाँ पर energy का transfer हो रहा है. Which energy? The food energy. The various steps or the various stages in a food chain
where the transfer of food energy takes place is called as trophic level. The first trophic level consists of producers. तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में कौन इंक्लूड किए जाते हैं? द प्रोड्यूसर्स. द सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी कंज्यूमर. प्रोड्यूसर को कौन कंज्यूम करता है? प्राइमरी कंज्यूमर. एंड द प्राइमरी कंज्यूमर फॉल्स इन सेकंड ट्रॉफिक लेवल. The third trophic level consists of the secondary consumers, and the fourth trophic level consists of tertiary consumers. Since the transfer of food energy decreases at every trophic level, the number of trophic level is limited and does not exceed 4 or 5. So my dear learners, क्या होता है, जो भी प्रोड्यूसर है, अगर जितना भी अमाउंट वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम द फूड द प्रोड्यूसर इज ऑब्टेनिंग, उससे 100% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचेगी. अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर. Therefore, लास्ट ट्रॉफिक लेवल तक आते आते जो फूड एनर्जी है वो इतनी कम हो जाती है कि इससे 4 या 5 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल एग्जिस्ट ही नहीं करते. Here is the pictorial representation of how producer and consumers work. So it starts from here. The producer produces food in the presence of sunlight. You can see the presence of sun here. It produces food in the presence of sunlight with the help of photosynthesis, and which include plants, algae, bacteria, etc., which is consumed by the primary consumer, which are basically the herbivores, and the secondary consumer consume these primary consumer, which are carnivores. And again, these carnivores are consumed by the tertiary consumers, which are usually top carnivore. So here is the description. Consumers that fed at all levels, parasites, scavengers and decomposers. जो हमारे पास decomposers हैं, these are that type of consumer जो हर एक consumer के ऊपर, हर एक trophic level के ऊपर feed करते हैं, and they get their food from all, किसी से भी from all the trophic levels they can get their food, as they are only decomposing the dead remains of them. So यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे कैसे जैसे हम टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, जो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करते जा रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है. फॉर एग्जाम्पल, प्रोड्यूसर्स आर लार्ज इन नंबर, whereas herbivores की जो नंबरिंग है एज अ प्राइमरी कंज्यूमर की जो पॉपुलेशन है दैट इज डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू द प्रोड्यूसर. एंड जो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर है, जो प्राइमरी कार्निवर्स हैं, उनकी पॉपुलेशन हर्बीवर से भी बहुत कम है. टर्शरी कंज्यूमर तक आते आते तो इट इज डिक्रीजिंग अ लॉट, यहाँ पर आकर तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाती है इसके आगे. ओके, so next we are going to learn about energy flow in a trophic level. Trophic level में energy कैसे flow होगी? The green plants producers absorb about 1% of solar energy falling on the leaves and store it as the food energy during photosynthesis. जो ग्रीन प्लांट्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अब्सॉर्ब करते हैं 1% ऑफ सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द लीव्स. जो उनके लीव्स के ऊपर सोलर एनर्जी उन्हें मिल रही होती है, उसका सिर्फ 1% वो स्टोर करते हैं एज द फूड एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, एंड 99% ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द वेरी फर्स्ट स्टेप. During the transfer of food energy from one trophic level to the next, 90% of energy is lost to the environment and only 10% transferred to the next trophic level. तो जो 90% energy है वो पहले ही it get lost and only 10% of energy is transferred to the next trophic level. So there is a decrease in amount of energy transferred at every trophic level by 10%, and this is known as the 10% law, which is very important question.
A question can be asked to you about the 10% law, like what is 10% law or describe 10% law. Question can be asked like what is the role of 10% law in the transfer of energy or in the energy flow in the trophic levels. So you must be prepared in all the ways. In this example, you can see in the very first step we have 1000 kilocalories of energy to the producer. Producer के पास 1000 kilocalories की energy है और जो primary consumer है उन्हें सिर्फ उसका 10% मिल रहा है, that is 100 kilocalories. जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर से भी सिर्फ 10% एनर्जी मिल रही है, दैट इज 10 किलो कैलोरीज. एंड जो टर्शरी कंज्यूमर है उन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर का 10% मिल रहा है, दैट इज ओनली 1 किलो कैलोरी. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी होता है. Here you can see the energy is very high. प्रोड्यूसर्स के पास में एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है, वेयर एज टर्शरी कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो बहुत लो हो जाती है. एंड दिस इज द रीजन कि जो प्रोड्यूसर की पॉपुलेशन है वो लार्ज है, वेयर एज द पॉपुलेशन ऑफ टर्शरी कंज्यूमर्स इज वेरी स्मॉल, राइट. सो नेक्स्ट, बायोमैग्निफिकेशन. Harmful chemicals like insecticides and pesticides, which are used to protect crops from the insects and pests, are absorbed by plants and they enter the food chain. जो harmful chemicals होते हैं, which include insecticides और pesticide, जिन्हें crops को insect से protect करने के लिए हम use करते हैं, they enter the food chain. वो food chain में enter कर जाते हैं. Since these chemicals are non-biodegradable, जो हम insecticides या pesticide use करते हैं, these are non-biodegradable, and that is why they get accumulated at every trophic level and their concentration increases. इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है उससे सेकंड ट्रॉफिक लेवल तक जाते जाते ये डिग्रेड नहीं करते हैं, right? These chemicals do not degrade and therefore they get accumulated. वो इकट्ठा हो जाते हैं हर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर और उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती रहती है. And the human beings occupy the highest trophic level. जो human beings है वो highest trophic level को occupy करते हैं and therefore the concentration of these harmful chemicals is maximum in our bodies. The increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of organisms at higher trophic level is called as biomagnification. Again, very important question. What is biomagnification? The increase in concentration of harmful chemicals. जैसे मैंने आपको बताया कि जो harmful chemicals हैं like insecticides and pesticides, they do not degrade. Therefore, they get accumulated at every trophic level. उनकी concentration increase करती रहती है and जो human beings हैं वो किसी भी trophic level का एक highest trophic level occupy करती हैं and therefore जो harmful chemical की concentration है हमारी bodies में सबसे ज्यादा होती है. And जो increase हो रही है in the concentration of harmful chemicals in the body of organism, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ human beings के साथ में हो, किसी भी organism के साथ में which occupy the highest trophic level. This is known as the biological magnification or biomagnification. Here is the example, accumulation of mercury in the food chain. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जब फाइटोप्लैंक्टन एंड बैक्टीरिया अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं उसमें मर्क्यूरी गेट्स involved in the food chain and these are in turn eaten by the primary, secondary and tertiary consumers and last में जाकर जो human beings हैं which occupy the highest trophic level, इनमें जो है सबसे ज्यादा concentration mercury की पाई जाएगी which is not fit for human consumption also. Now we are going to learn about the ozone layer. Ozone layer is a protective blanket around the earth which absorbs most of the harmful UV radiations of the sunlight and thus protect the living beings from many health hazards such as skin cancer, cataract, destruction of plants, etc. Ozone layer एक ऐसी protective layer है जिसे हम protective blanket भी बोल सकते हैं around the earth, जो कि है
absorb कर लेती है most of the harmful UV radiations of the sunlight and protect करती है living beings को from many health hazards, from many diseases which include skin cancer, cataract, the destruction of plants. Ozone layer is present at the higher level of atmosphere. जो ozone layer है atmosphere के higher level में ही present होती है. It is deadly poisonous at ground level. अगर ozone layer ग्राउंड लेवल पर हो तो इट इज डेडली पॉइजनस, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है फॉर द ऑर्गेनिज्म. एंड द फॉर्मूला फॉर ओजोन लेयर इज O3. केमिकल फॉर्मूला इज द O3. नेक्स्ट वी हैव फॉर्मेशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल. ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसी होती है? द हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन ब्रेक डाउन द O2 मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन होती है दे ब्रेक द O2 मॉलिक्यूल इनटू फ्री ऑक्सीजन एटम बाय द रिएक्शन एज गिवन. जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है on being interaction with the UV radiation splits into oxygen atom, or we can say the free oxygen atom. These oxygen atoms then combine with the oxygen molecule to form ozone molecule. ये जो हमारे पास फ्री ऑक्सीजन है दे कंबाइन करती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में and they form ozone molecule. This is how the formation of ozone molecule take place. Next, we are going to learn about depletion of ozone layer. The decrease in the thickness of ozone layer over the Antarctica was first observed in 1985 and was termed as ozone hole. जो ओजोन लेयर की थिकनेस है सबसे पहले अंटार्कटिका में ऑब्जर्व की गई थी इन द ईयर 1985 एंड इसे क्या नेम दिया गया था, क्या टर्म दिया गया था? ओजोन होल. This decrease was linked to excessive use of synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used in refrigerators, ACs, etc. So ये जो ओजोन लेयर की थिकनेस है ये डिक्रीज होना किस चीज से लिंक किया गया था, जो किस चीज से कौन सा फैक्टर है जिससे डिक्रीज हो रही है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर? It is excessive use of chemicals, synthetic chemicals like chlorofluorocarbons. So chlorofluorocarbons are also known as CFCs. आपको इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है. Write the full form of CFCs. So it is chlorofluorocarbons. Okay, here you can see that ozone layer is present at a very higher level. This is the ozone layer which is present at least 10 kilometers above the surface of the earth, and it protects, see how it is protecting the UV radiations. Very less UV radiations जो हैं वो अर्थ तक पहुंच पा रही हैं, and वो भी वहां से यहाँ पर जो होल होंगे, right? These are some holes from where the UV radiations are coming to earth. अगर ये holes नहीं हो तो सारी की सारी UV radiations जो हैं reflect back कर जाएं, and no single UV radiation will come to the earth, and जो diseases हमने पहले discuss की like cataract, skin cancer, वो सब भी नहीं होगी. Okay, so next we are going to learn about effect of adding waste to the environment. अगर हम environment में waste add कर रहे हैं तो उसका क्या effect होने वाला है? The human activities produce a lot of waste material which are thrown away into the environment. Human activities कुछ ऐसा waste produce करती हैं which are thrown into environment, जो कि है directly environment में throw कर दिया जाता है. की लेना है? These wastes cause pollution of air, water, and soil. These waste material
प्रोड्यूस आर ऑफ टू टाइप्स. जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस किया जाता है, दिस इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, विच इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या होता है? दीज आर दोज वेस्ट विच आर डीकम्पोज्ड इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो वेस्ट को डिकम्पोज किया जा सकता है इनटू द हार्मलेस सब्सटेंसेस with the microorganisms or by the microorganism, those are known as biodegradable waste. For example, vegetables, fruits, pulses, cereals, cotton, jute, etc. Whereas the non-biodegradable wastes are those waste which cannot be decomposed by the microorganisms. For example, these polythene bags, plastics, synthetic fibers, glass, metals, synthetic rubber, insecticides, pesticides, etc. Okay, so this was like the garbage is being produced or the waste is being produced. Now we will learn how we can manage this garbage that we are producing. The first one is biogas plant. Biodegradable waste can be used in biogas plants to produce biogas and manure. जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे यूज किया जा सकता है बायोगैस प्लांट्स में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस एंड मैन्योर. Sewage treatment plant is the second method. The drain water can be cleaned in sewage treatment plant before adding it to rivers. कि जो भी ड्रेन वाटर है अगर उसे क्लीन कर लिया जाए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बिफोर एडिंग टू रिवर्स, इट कैन प्रिवेंट अ लॉट ऑफ रिवर पोल्यूशन. इससे बहुत ज्यादा रिवर पोल्यूशन जो है कम हो सकता है अगर हम जो ड्रेन वाटर है उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ही क्लीन कर लें. Landfillings. The waste was buried in low-lying areas and compacted by rolling with bulldozers. कुछ ऐसे एरियाज होते हैं which are low-lying. Right? Low lying means कुछ ऐसे खड्डे हो सकते हैं in the surface of earth जहां पर ऐसी लैंड फिलिंग की जा सकती है एंड उसे बुलडोजर के साथ में बाद में रोल किया जा सकता है, जिससे जो है वो एरिया भी लो लाइन नहीं रहेंगे, वो इक्वल टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो जाएंगी एंड जो वेस्ट है वो भी मैनेज हो जाएगा. नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग. Organic waste are filled in a compost pit and covered with this layer of soil. After about 3 months, garbage changes to manure. तो जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उन्हें एक खड्डे में भर दिया जाता है और उसे सॉइल से कवर कर दिया जाता है. 3 मंथ्स के बाद में क्या होता है कि जो गार्बेज है इट चेंजेस इनटू मैन्योर. द नेक्स्ट मेथड इज रिसाइकलिंग. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इट कैन बी रिसाइकल्ड टू मेक न्यू आइटम्स. Reuse. It is convenient technique to use the items again. For example, using newspaper for making envelopes. यो reuse है, जरूरी नहीं है कि biodegradable waste का किया जाए या non biodegradable waste का किया जाए. reuse हर एक चीज का करना चाहिए and we should manage the garbage very properly. So this was all about our chapter. Thank you so much for watching the video.